Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. In the last video, we have seen that we have installed the VS Code. Now in this video, we will make use of it and we will do one of the coding question or we will do the web development right now after seeing this PPT. So let's start. So first of all, who have discovered the HTML? So the first question is, so the HTML is discovered in November 1990 by a scientist, Tim Berners-Lee. Now what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a full form. Now it is used for making the web pages. These are the building blocks of the HTML page. HTML elements are represented by the tags. HTML is the content of the website. Now let me give an example. If you open any website, example Amazon, Flipkart, so whatever the content you are able to see on the screen like images, prices, descriptions, all are the HTML. सो सिंपल सी बात है, जितना भी कंटेंट हमको वेबसाइट पे दिखाई देता है वो सब HTML होता है और जितना भी हम डिजाइनिंग पर देख पाते हैं कि जो प्राइस है वो लिखा जाता है, पहले उसको काट दिया जाता है, बाद में लिखा जाता है, उसको सब स्टाइलिश करके उसको हम ग्रीन कलर में या रेड कलर में हम लोग लिख देते हैं. सो उसकी स्टाइलिंग कैसे होती है? उसकी स्टाइलिंग होती है थ्रू CSS. So we call them as a CSS. So right now the content is simply HTML. The current version of HTML is HTML5. This is example. Now let's go through. So this is the HTML tag. This is complete HTML document. Now what is doc type HTML, that we will discuss later. So in the next video we will see what is doc type HTML. So this is complete HTML and these are the content which are written inside the tag. We call them as a HTML tag. We will discuss later more about the HTML tag, but right now you have to just understand what is HTML. So HTML यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है. So हम उम्मीद करते हैं कि आपको पांचों पॉइंट क्लियर होंगे, एग्जाम्पल भी थोड़ा बहुत क्लियर होगा. So this is HTML document. Okay, let's understand the structure of the HTML document. So an HTML document is mainly divided into two parts. The first part is head. The second part is the body part. So the head part contains the information about the HTML document. For example, the title of the page, version of HTML, and metadata. There are many things are present inside the head tag, but right now we are dealing with the basics. So I have written here only the title part. We will discuss later and we will see later how many things we can include inside the head part. Now what is body part? So head is simply my head. If I take an example of human, so what is head? Head is the brain in which all the details are fit. So same as for website, which detail we can see the title of the website. तो अगर हम लोग वेबसाइट को देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिखता है? हम लोग को टाइटल दिखता है. ओके, सो और सेम एज जब कोई हमको देखता है तो सबसे पहले क्या दिखता है? हमारा चेहरा दिखता है. सो वो हमारा हेड हो गया. वेबसाइट का हेड क्या हो गया? टाइटल हो गया. उसके बाद हमें बॉडी दिखता है. बॉडी क्या है? कंटेन्स एवरीथिंग डिस्प्ले ऑन द वेब पेज. सो जो सिर के पास जो बाकी चीज़ें हमें दिखती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं, जिससे हम लोग सारा काम ले सकते हैं, हम सारा काम कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज हेड, व्हाट इज बॉडी. सो HTML टैग, जो ये HTML टैग होता है, ये सबसे रूट एलिमेंट होता है, सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होता है इन कंप्लीट HTML लैंग्वेज. सो सारे जो हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है, ये सब HTML टैग से छोटे होते हैं. टाइटल टैग हेड टैग से भी छोटा होता है. सो अब हम लोग यहाँ पे HTML के सामने हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, दैट इज lang. HTML lang is equals to en. So that's mean it defines simply the language. So by default the language of this one is English, but if we specify something else then that will be the content will be reflected in that language. So ये सबसे मेन चीज़ आती है कि क्रोम को पता कैसे चलता है ब्राउज़र को कि भाई ये HTML ही है, मतलब ये सिंपल सा टेक्स्ट फॉर्म में क्यों नहीं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. ये क्वेश्चन आ सकता है, why it is happen. So think for 1 second. So let me give an example. जब हम इसको वेब ब्राउज़र में खोलते हैं, so सबसे पहले वेब ब्राउज़र ये देखता है कि भैया टॉप पे क्या है? HTML. तो जैसे ही वो HTML टैग को देखता है वो कहता है कि अरे तो HTML है. वो बोलता है अच्छा HTML है तो रुक जाओ, मेरे को उसके अंदर जाने दो. तो जैसे वो इसके अंदर जाता है तो उसको हेड टैग मिलता है. वो बोलता है अच्छा हेड टैग है, अच्छा मतलब इसमें तो बाकी चीज़ें, इसमें तो टाइटल वगैरह भी होंगे, तो उसको एज टाइटल दिखाता है. उसको जैसे उसको बॉडी मिलता है उसको समझ में आ जाता है कि
हमें जो कंटेंट दिखाना है वो सारा बॉडी के अंदर है। फिर जैसे ही HTML उसको इंडिंग तक दिखता है, जैसे ही इसको स्लैश दिखता है, आई थिंक इट इज़ अ फॉरवर्ड स्लैश, जैसे इसको ये दिखता है फॉरवर्ड स्लैश HTML, उसको पता चल जाता है कि HTML हमारा जो भी कंटेंट था वो सब खत्म हो चुका है। नाउ इट डू नॉट हैव टू प्रेजेंट एनी टैग विच इज़ रिटन आफ्टर द HTML। आई होप दिस इज क्लियर कि ये ब्राउजर को पता कैसे चल पाता है। चलिए 1 मिनट के लिए इसको ज़रा कोड कर। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस वन एंड स्टार्ट अवर लाइव सर्वर। So as we can see that all the content are visible here, but what if we do not include the HTML tag, head tag and the body tag, then what will be the output? Let's take a look, because maybe there are some cases in which we do not include. So will it be produce some different result or same? Yes, both are same. So let me clarify one thing. We are using the HTML5 version, so it is not compulsory to include all these tags, but for the good practice, it is very important for us to take care all this point, because our web browser is so smart, because it automatically detects in what manner it has to display the result. But it is not at all good practice. So we need to always include wherever we need to include the head tag, body tag and the HTML tag. So I hope this is clear, and there are many more reasons that what's the side effect of not including, but right now you do not have to deep go inside this. Put in your mind that we have to follow the good practice rule. I hope it is clear to you. I will meet in the next video with the next video. Till then, bye bye, take care.